Hi, this is Ashwini, and in today's video in the Right Life My Way series, I'm going to discuss description and dialogue writing in a story. What is description? Description is when you use vivid and beautiful words to describe a setting, to describe a person, to describe a place and build a world that is fantastic. And you do not use plain words, but you use vivid words and words that convey movement and that convey some feeling, the sense of sight, the sense of smell, the sight of hearing, like the ringing of bells behind or the shining of sunlight on someone's face. So you have to convey in such a way that the reader feels that he is a part of the story, and he actually feels the snow that is cold. He actually feels the wind that is whipping across the face, right? So you have to use these kind of active words and words that convey movement. तो इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन क्या करेंगे, स्टोरी का जो वर्णन होता है, जो आप लिखोगे, जो डायलॉग से जो बातचीत है उससे अलग होता है, और जो वर्णन होता है आपने अच्छे लैंग्वेज में ऐसे शब्द यूज करने हैं जो मूवमेंट कन्वे करते हैं, जो आदमी को, जो रीडर होता है उसको झट से उस कहानी में बिठा देते हैं और उसको लगता है कि ये सब कुछ महसूस कर रहा है कि हवा कैसे चल रही है, धूप कैसे है, उसमें कैसे खाया है, उसको कैसे महसूस हो रहा है, या गुस्सा महसूस हो रहा है या दुख महसूस हो रहा है। आपने ऐसे शब्द यूज करने हैं जो, और उसने कोई चीज को छुआ, उसने झट से उसका हाथ निकाल दिया, वो बहुत गर्म था, ये महसूस होता है। जो लिखी जाती है तो अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष का ज्यादा इस्तेमाल होता है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, वो जनरली पर्सनल स्टोरीज लिखी जाती हैं, और जो अन्य पुरुष होता है वो जनरली ज्यादा स्टोरीज लिखी जाती है, क्योंकि आप ऊपर से स्टोरी देखते हो और हर कैरेक्टर के बारे में आप लिख सकते हो। जब आप उत्तम पुरुष के बारे के वॉइस में लिखते हो तो आप मैंने क्या सोचा, मैं उसको मिलने गई, मुझे उसने ऐसे बोला, ऐसे लिखी जाती है। तो जनरली यंग लोगों की जो स्टोरी होती है वो ऐसे लिखी जाती है। सो व्हेन यू आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग थिंग्स, यू हैव टू रिमेम्बर दैट व्हाट वॉइस आर यू गोइंग टू यूज। आर यू गोइंग टू यूज first person, if you're going to write in the first person, if you're going to write it in the second person, or in the third person. The first person only, I mean myself, where you are the main person who feels things. So I got up and I realized that I was late. I ran down and I smelled and the fragrance of mother's cinnamon buns wafted through the air, and I felt really hungry. So that is the first person. The second person is you were looking at the picture in the frame and you didn't understand the word. Okay, so you could have it that way. Use you. Then you're the third person, and third person is like a bird's eye view of everything, and generally books are written in the third person because you get to know the characters which are there, and you can write about each and every character from a bird's eye view. So that is the third person. So you have to decide what voice you are going to write in, and then you have to make sure that you are balancing description and dialogue correctly. So when you have to do a lot of world building, when it is a new place altogether and it is not an ordinary world, so you have to be careful that you don't overdo it, or the reader gets really bored. Or also when you describe a character, you have to make sure that you don't over describe a character so much that a person is not able to imagine a little bit of himself. The reader is not able to imagine the person in his own way. So don't try and describe so much that a reader gets put off. Okay?
So that is one thing that you have to take on as a writer, how much you are going to describe a place, a fantasy land or a character. And you shouldn't describe each and every movement when you do a dialogue. So when I get to dialogue, I'll speak about that. Alright? So जब आप वर्णन किसी का, कोई चीज का करते हो, कोई जगह के करते हो, आपके नायक का करते हो, तो आपने इतना भी, अगर कोई दूसरी दुनिया हो तो आपको ज्यादा वर्णन लिखना पड़ेगा, लेकिन आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आप ज्यादा लिख दोगे तो शायद रीडर बोर हो जाएगा। और कैरेक्टर के बारे में भी, आप कैरेक्टर को जब आउटलाइन बनाते हो तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखते हो। अगर आपने ओवर राइट या ओवर डिस्क्राइब किया, बहुत ज्यादा आपके नायक के बारे में वर्णन किया, तो शायद जो रीडर होता है वो उसकी खुद की जो प्रतिमा है नायक की, वो शायद उसको डिस्टर्ब होगा। आपने थोड़ा सा कम लिखना है, क्योंकि रीडर को भी आप एक प्रतिमा बनानी है आपके मेन कैरेक्टर के बारे में या साइड कैरेक्टर के बारे में। तो ओवर डिस्क्रिप्शन आपने संभल के डिस्क्राइब करना है। तो ओवर डिस्क्रिप्शन you have to be careful and draw a line at places, right? So you must know the character really well so that you can write the dialogue accordingly. And dialogue has to move the story ahead, and it should just not be something like, "Hi, how are you? I'm fine. How are you? It's such a nice day." So it should not, though dialogue should be short and convey something important, and they should move the story forward, but they should not be mundane. That is just time wasting and jarring for the reader. तो जो आप डायलॉग या बातचीत लिखते हो, आपको आपके नायक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा नायक होगा वैसा उसका डायलॉग होगा और उसकी बातचीत भी उस तरह की होगी। लेकिन आप ऐसे फालतू के डायलॉग नहीं लिखोगे कि हाँ कैसे हो, ठीक हो, कैसे हो, तेरी मम्मी कैसी है, ये सब रेलेवेंट नहीं होता है। ऐसे आपने बातचीत के डायलॉग लिखना है जो आपकी कहानी को आगे बढ़ा दे, राइट? कुछ इम्पोर्टेंट चीज बोलनी चाहिए अपने डायलॉग में। तो और डायलॉग नायक को भी अच्छे से कन्वे करता है कि ये नायक कैसा है, क्या वो बहुत कम शब्द यूज करता है, या ये नायक जो है वो बहुत ही कठिन शब्द यूज करता है, या बहुत ज्यादा बात करता है, या बहुत कम बात करता है, या उसको ठीक से बात करने को नहीं आता है, वो हतलाता है। So when you're writing dialogue, the dialogue should also convey the character that you have thought of. So does he talk too much? So the dialogue will be very short and quick perhaps. Or does he talk too much? So he will be just going around in circles. Does he talk with very difficult words? Does he use difficult words? Or does he use simple words? And language and dialogue and knowledge of language many times conveys the level of society that you come from. तो जब आप बातचीत और डायलॉग लिखते हो तो पढ़ाई लिखाई समझ में आती है जब आदमी अपना मुंह खोलता है। तो ये याद रखिएगा कि आप ये जो आपका कैरेक्टर है कौन से सोसाइटी से, कौन से लेवल ऑफ सोसाइटी, कौन से एजुकेशन या कौन से कैसे उसने पढ़ाई लिखाई की है, कौन से लेवल तक समझ में आता है, तो आपने वैसे लिखना है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जब इमोशनल होते हैं तो बहुत सारी बातचीत करते हैं। तो शायद आपका कैरेक्टर या नायक ऐसे होगा जो बहुत ज्यादा बात करेगा जब वो इमोशनल होगा, या आप ऐसे कैरेक्टर लिखोगे कि जब वो इमोशनल या डरा होता है वो बहुत ही चुपचाप सा हो जाता है। So sometimes characters can speak too much when they are emotionally charged. Perhaps that's how your character is. And many people, when they are emotionally charged, they don't speak a lot. They suddenly shut up. So maybe your character is that way and you need to cut. So you have to draw a balance between dialogue and description, because too much of dialogue can be too fast-paced sometimes and too confusing,
and too much description can be really boring for the reader. तो आपने बैलेंस रखना है, कितना डायलॉग लिखना है और कितना डिस्क्रिप्शंस देने. कि एक्शन सीन के बाद स्लो सीन जनरली होता है, कॉमिकल कुछ मजाक होता है, तो ये आपने छोटे छोटे चीजें लिखनी है और ट्रांजिशंस लिखने हैं. और ट्रांजिशंस कभी कभार आप बाद में भी ड्राफ्ट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट ड्राफ्ट में, जो हम एडिटिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो टू दिस, after talking about description and mood, conveying of mood, finding which voice you want to write in, and keeping a balance with dialogue and description, because too much of description can get really boring and too much of dialogue can be very exhausting, because then the pace of the story also suffers. So if you want to keep a good pace of a story, you should have action scenes followed by calm scenes and maybe some comical scenes. Then again you can have some action. Because it is action throughout, then the reader will get exhausted. But you can always make changes in the drafting stage. You can make smooth transitions and cliffhangers. This I'll speak about in the editing video, which will be next. Then another thing that you have to remember is that you just have to write he said, she said only, and that is accepted. Only sometimes you can say exclaimed or use some other words, or asked so and so, and the dialogues have to be in each person's dialogue has to be in a different paragraph, and you have to use double inverted commas, single inverted commas, whatever is your choice. Right? So you can use do not and don't also, anything is fine, but consistently keep it the same. So this is about writing in description. I hope this video helps you. We'll see you next time with the video on editing. Bye bye. See you next time.